गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट करें हम लोग ओवरहेड्स। बेटा हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 किया था, यस सर। जिसके अंदर कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल कैपेसिटी का था। यस सर। नाउ हमारा एक एग्जांपल था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज फॉर फिक्स कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं, बजटेड ओवरहेड जितना भी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड आउट किया था यस सर। 14, प्लस हमने लमसम प्रॉफिट ऐड किया एंड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड कर लिया, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने कस्टमर को बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो इतने में बेचने वाले, राइट। अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, एक्चुअल सब कुछ हो जाएगा, तो एक्चुअल ओवरहेड भी मेरे पास आ जाएंगे, यस राइट। एट दैट टाइम मेरे पास सिचुएशन में है वेरिएबल कॉस्ट सेम, एक्चुअल 1,10,000 हुआ और एक्चुअल क्वांटिटी 24,000 हो गई, तो पर यूनिट देखो कितना आता है, यस 2.5833। ठीक है। सो 1458। कस्टमर से हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमने एडवांस में ही उसको बता के रखा है कि हम 20 रुपीज चार्ज करेंगे। यस अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि एक्चुअल रेट ज्यादा है, यस तो जितना 58 पैसा ज्यादा हुआ उतना मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। एक्चुअल ज्यादा है, कस्टमर ने हमको 20 रुपीज पेमेंट किया, इसके लिए फिक्स ओवरहेड सिर्फ हमारा रिकवर्ड हो पाया 4 रुपीज, बट एक्चुअल खर्चा हो गया 58 पैसा ज्यादा, 4 रुपीज 58 पैसा। तो यस जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एब्जॉर्प्शन अमाउंट। तो क्या भाई एक्चुअल में 24,000 प्रोड्यूस हुआ था और 4 रुपीज हमारा रेट है, तो हमारा रिकवरी हुआ है सिर्फ 96,000। यस एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ 1,10,000 का। सो हमारा खर्चा ज्यादा हो गया और रिकवरी कम हुआ। सो दिस 14,000 इज नोन एज अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर रिकवरी। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, प्रॉफिट इज डिक्रीज। नाउ इसका ट्रीटमेंट करना होगा हमें, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो पहला ट्रीटमेंट होता है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड, दूसरा ट्रीटमेंट होता है एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड तीसरा ट्रीटमेंट होता है सप्लीमेंट्री रेट। ये यस तीन ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, राइट। तो पहले ये एग्जांपल लिख लो। यस
डन. Yes. Now heading दो treatment of under over absorption. फर्स्ट हम लोग बोलते हैं carry forward to next period. दूसरा ट्रीटमेंट adjust in the same period. 2 में A आ जाएगा adjust against profit loss account, जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं चार्ज टू प्रॉफिट लॉस. बी सप्लीमेंट्री रेट, उसमें पहला पार्ट आएगा एंड ऑफ द ईयर और दूसरा पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर. लिख लो इतना. Yes. Yes. अभी सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, तो कि ये सबसे बेस्ट है. फर्स्ट ड्यूरिंग द ईयर सप्लीमेंट्री रेट ड्यूरिंग द ईयर इज बेस्ट. अगर ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो एंड ऑफ द ईयर. फिर नेक्स्ट Yes. बेस्ट एडजस्ट अगेन कॉस्टिंग पीएनएल एंड सबसे लास्ट ट्रीटमेंट अगर हम प्रायोरिटाइज दे तो कैरी फॉरवर्ड. अब कैरी फॉरवर्ड में एकदम सिंपल, जो भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ ये साल कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर हम ट्रीटमेंट देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये साल की प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए और ये साल के प्रोडक्शन क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, बट वी आर ब्लेमिंग टू नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्वांटिटी, सो इट इज नॉट गुड. Yes. Right. Second, adjust against profit loss account. That means we are blaming to sold quantity instead of production quantity. अगर closing stock है तो उसको हम impact नहीं कर रहे हैं under over, तो इसके लिए ये भी इतना बेस्ट नहीं है. Yes. सप्लीमेंट्री रेट बेस्ट है, जहां पे मेन रेट गया वहां पे ही आपका सप्लीमेंट्री रेट जाएगा, ताकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रॉपर कर देंगे, जिससे कारण हमारा क्या प्रॉपर हो जाएगा, तो कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आउटपुट, जैसे हमने एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में किया था ना, तो हम सप्लीमेंट्री रेट ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते थे, जहां पे हमने मेन रेट लिखा था फैक्ट्री ओवरहेड. Yes. राइट. तो अभी देखो इनका थियरी पार्ट थोड़ा सा और in order to get fixed overhead cost per unit, the purpose of determining sale price, we need to know actual fixed overhead, actual level of activity. But the actual overhead and actual level of activity would be known to us only at the end of the accounting year, whereas the selling price has to be known before the commencement of accounting period, and therefore the actual information cannot be used. Absorption costing techniques against marginal costing techniques lays down artificial link between budgeted overhead and budgeted level of activity. तो हमने देखो बेटा यहाँ पे क्या किया, ये जो 1 लाख रुपीस लिया था दैट इज अवर बजटेड ओवरहेड, एंड जो ये आउटपुट लिया था दैट इज बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी.
Yes. Level of activity can be expressed in terms of output, machine hours, labor cost, and so on. Right? Once the absorption rate is developed, every time something is produced, the overhead will be charged at absorption rate. The factory overhead that will write in the cost sheet are absorbed overhead. तो हम जो लिखेंगे वो कौन सा होगा? Absorption amount वाला, and not the actual, unless the company follows the marginal costing. Depends upon the terms in which level of activity is expressed. There are 6 different method as stated below. तो हमने ये किया हुआ था आउटपुट मेथड, मशीन अवर्स, लेबर कॉस्ट. सबने हमें रुपीज पर यूनिट, यहाँ पे रुपीज पर मशीन अवर्स, रुपीज पर लेबर अवर्स, और ये सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट में भी सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, एंड प्राइम कॉस्ट में सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसके बेस. Yes. Now, selection of method. If the company manufacture only one product or 2 or more product, but which are more or less identical from overhead point of view, then output method is the best. When the company manufacture 2 or more product which are quite different from overhead point of view, then we are selecting machine hours, या तो labor hours, या तो material cost, या तो labor cost, या तो prime cost. तो अब देखो machine hours rate. If the production is basically machine oriented, then the overhead would mainly depends upon the machine utilization, and therefore the product which will make more use of machine should be charged more amount of overhead also. Accordingly, we follow the machine hours rate. When the output is predominantly labor oriented, we may follow one of these 2 methods. If the overhead mainly depends upon labor time, then labor hours rate method should be followed. Whereas if the day mainly depends upon the labor type, then the labor cost method is followed. Labor type means skilled labor, semi-skilled labor. It may be noted that if there is only one type of labor or there are different labor, but the wage rate is same, then these 2 method will give the identical result. Material cost method, if overhead depends upon the cost of raw material consumed, then this method should be followed. If overhead is depends not only the material cost but also labor cost, then we follow this method. Now dictation of method, ये क्या होता है exactly? तो कि भाई कंपनी ने क्या मेथड फॉलो किया वो क्लियरली नहीं बताएंगे, हमें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी मेथड कंपनी ने फॉलो की. Sometimes the method is neither named nor adequate information is given so as to enable us to calculate the rate. However, the overhead absorption in past month of the same accounting period are given along with the level of activity in different terms. In such cases, we compare the overhead absorbed with the level of activity in different terms, and which method gives constantly the same rate of overhead absorption can be presumed as being followed by the company. If 2 or more methods satisfy this condition, any one of them can be selected randomly. If this method named A but the rate are not given, then in such case also the same techniques can be followed for dictation of rate. इसका लिए हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये इसके लिए करेंगे. Now under over absorption, this is difference between the amount of overhead absorbed, the amount of overhead spent. Treatment. In borrow terms, there are following option. Adjust the difference in the same year. Supplementary rate, use the supplementary rate method. Adjust the cost of sales at the end of the year. Costing P&L. Carry forward the difference to next period. Adjust the cost of sales means last time की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा. अब इसके बदले इस हिसाब से प्रेजेंट करना एग्जाम में अगर ट्रीटमेंट थियरी पार्ट आता है तो. इंस्टेड ऑफ दिस ये प्रेजेंटेशन देना. ठीक है बेटा? Yes. अब सुनो, हमने जैसे यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया था. तो एक तो बजट इंफॉर्मेशन था, आउटपुट था, ओवरहेड था, और हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था. ये 1 लाख रुपीस था.
ये 25,000 था, तो ये 4 रुपीज का रेट मिला था, राइट बेटा? Yes, sir. अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन में हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से आउटपुट 24,000 था, ओवरहेड 1,10,000 था, आपने रेट दिया था 4.58। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट भी फाइंड आउट करके रखा था 14,000, Yes, sir. राइट? तो जब हम कैरी फॉरवर्ड मेथड की बात करते हैं तब कैसा होगा? देखो, एक हमारा प्रोसेस अकाउंट होता है। सो प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट हम मटेरियल करते हैं, डायरेक्ट लेबर करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं हम डेबिट। तो जब हम एब्जॉर्प्शन रेट की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे कैसे होगा? 24,000 इंटू 4 रुपीज डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? And 60. 96,000। अभी फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट कैसे दिखेगा आपको? यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोसेस 24 इंटू 4, 96,000। एक्चुअल खर्चा मेरा कितना हुआ? 1,10,000। तो वी आर राइटिंग हियर कैश बैंक 1,10,000, और यहाँ पे आपको डिफरेंस 14,000 मिला। समझ में आया बेटा? ये डिफरेंस है। अब कैरी फॉरवर्ड बोलेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, और नेक्स्ट ईयर Yes, sir. ये ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, Yes, sir. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज द कैरी फॉरवर्ड मेथड। अगर हम कॉस्टिंग पीएनएल करते तो पीएनएल अकाउंट, तो ये बैलेंस की जगह पे लिखते थे पीएनएल अकाउंट। अगर हम सप्लीमेंट्री रेट फॉलो करते थे तो ये पीएनएल की जगह पे हम लिखते थे प्रोसेस Yes, sir. अकाउंट, और अंडर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लगे थे। और जो भी डेबिट में आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा सब कुछ में भी ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट का इफेक्ट होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? Yes, अभी देखो, प्रोसेस अकाउंट में आउटपुट है, तो आउटपुट का दो पार्ट होता है, एक तो सोल्ड क्वांटिटी होगा और एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा। तो ये दोनों इंपैक्ट होगा, और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक का होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन का इंपैक्ट उधर भी चला जाएगा। अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो तुमको और बेटर थोड़ा सा आइडिया आ जाए। yes. Question number 12. In a manufacturing unit, factory overhead were recorded at predetermined rate. Predetermined rate means absorption rate Yes, sir. of 25 per man day. The total factory overhead express incurred the main days actually work 41 lakh 50,000 in 1.5 lakhs main days respectively. Out of the 40,000 units were produced the period during a period 30,000 were sold. That means 40 में से 30 sold हुआ, तो 10,000 का क्या होगा मेरे पास? Closing stock. Closing stock, correct? Yes, Of finished goods, closing stock of finished. finished. On analysis, the record it was found 60% of under over absorption was due to defective planning and rest were attributable to increase in overhead cost. How would you under over treatment in cost accounting? तो सबसे पहले बेटा मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो कि सबसे पहले अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट। तो देखो क्वेश्चन पर पहला, calculations of अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन अमाउंट। एब्जॉर्प्शन अमाउंट इज आल्सो नोन एज रिकवरी अमाउंट।
अब देख बेटा यहाँ पे एक्चुअल कितना है, एक्चुअल 1.5 मेनलेक्स डेज, मतलब 1,50,000 एंड मेरा 25 रुपीज का रेट है। मतलब ये लेबर ओरिएंटेड है, इंस्टेड ऑफ पर आवर्स रेट उसने पर डे दे दिया। Yes. 1,50,000 इंटू 25 रेट है, तो कितना अमाउंट होगा बेटा? Yes. 47 lakhs 50. Actual overhead is given 41, so here 41,50,000. ये लिख लो पहले फर्स्ट पार्ट। Yes. डन, Yes. ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग कितना परसेंटेज है? 60%। सो 4 lakhs का 60% करो। 24 2 lakh 40,000. एंड नॉर्मल रीजन बैलेंस 40%, 1,60,000। अब जो डिफेक्टिव प्लानिंग के हिसाब से है, दैट इज ऑलवेज डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। Yes. For this 1,60,000, any one method can be select। क्या क्या मेथड है अपने पास माइक? क्योंकि ये या तो कैरी फॉरवर्ड, राइट, या तो एग्जिस्ट इन P&L अकाउंट, और आइदर सप्लीमेंट्री रेट, बट ड्यूरिंग द ईयर पॉसिबल नहीं, इसमें एंड ऑफ द ईयर पॉसिबल, क्योंकि ईयर ऑलरेडी कंप्लीट है। Yes. सो अभी एनी वन ऑफ मेथड में हम लोग को कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? सप्लीमेंट्री रेट एंड ऑफ द ईयर, लिखो, इतना लिख लो पहले। Yes. डन। अभी देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिया था, इसमें है ना मैं, एब्जॉर्प्शन रेट 4 रुपीज है, एक्चुअल रेट 4.58 है, तो 0.58 इज अ सप्लीमेंट्री रेट। उसको हम दूसरा कौन से तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये जो अमाउंट है ना 14,000 बेटा, Yes. अंडर एब्जॉर्प्शन का, डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 24 करके देखो 58 पैसा आ रहा है, Yes. राइट? Yes. तो सप्लीमेंट्री, हाँ, सप्लीमेंट्री रेट के लिए दो पॉसिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी कंपेयर विथ एक्चुअल रेट, तो भी सप्लीमेंट्री रेट मिल जाएगा, Yes. या तो अंडर एब्जॉर्प्शन या तो ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब मुझे सप्लीमेंट्री रेट चाहिए अभी,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है ना 1,60,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है? So, 40,000 were produced, but 30,000 was sold. So, प्रोडक्शन 40,000. क्वांटिटी वी हैव टू राइट Yes, sir. So, प्रोडक्शन 40,000. 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। सो रेट कितना आता है? Oh, लिखो सप्लीमेंट्री रेट। लिखा बेटा? yes. ₹4, राइट? Yes. लिखो हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग treatment of under over absorption, राइट? अब Yes. देखो costing P&L or either you will write P&L account also। अब देखो आपने यहाँ पे लिखा था 2,40,000 बिकॉज डिफेक्टिव प्लानिंग। तो Yes. दिस ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग 2,40,000। अभी सप्लीमेंट्री रेट जो क्वांटिटी सोल्ड हो गया उसका प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में दिखता है, इसके लिए कॉस्टिंग पीएनएल सोल्ड क्वांटिटी इनटू सप्लीमेंट्री रेट। तो सोल्ड क्वांटिटी कितना है बेटा? 30। Yes. 1,20,000 and increase in value of closing stock of finished goods। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना? प्रोडक्शन 40, 30, 10,000 into 4 rupees, 40,000 total। Yes. डन? Yes. लिख लो इतना कि हो गया लिख के। So, done. डन ना? Yes. अभी मैं आपके पास बेटा मॉड्यूल रहेगा भी कि नहीं रहेगा? So, this is over HSI. I should have. मैं मॉड्यूल से एक दो क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहता हूँ। Yes, sir. I have it. हाँ, मैं पीडीएफ तो ओपन कर ही रहा हूँ। एक मिनट है बेटा। चैप्टर नंबर कौन सा है ओवरहेड का? 4th है ना आई थिंक। चैप्टर नंबर 4th। हाँ, एक सेकंड में। हाँ,
मैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बेटा? Yes. हम्म Now this part, treatment of under over in cost accounting. Yes. हाँ बेटा, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ. हाँ, question number 7. In a factory overhead of a particular department are recovered on the basis of rupees 5 per machine hour. Total expense incurred and actual machine hours for the department for the month of August were 80,000 and 10,000 hours respectively. Of the amount of rupees 80,000, rupees 15,000 become payable due to an award of labor code and rupees 5,000 was in respect of expense of previous year booked in the current year month August. Actual production was 40,000, of which 30,000 units were sold. On analysis, the reason it was found that 60% of under absorbed overhead was due to defective planning and the rest was attributable to the normal increase. Explain how would you treat the overhead in cost accounting. तो बेटा पढ़ के एब्जॉर्प्शन अमाउंट फाइंड आउट करो. एब्जॉर्प्शन अमाउंट कितना होगा? Yes. So 2 lakhs. That is the absorbed amount till now. नहीं ना बेटा, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड 80,000 है. रेट पर Fact. Oh, sorry. Yes. So, like, what is the first line? What does the first line mean? In a factory overheads of a particular department are recovered on the basis of rupees 5 per machine hour. यस, तो 5 That रुपीज is इज द machine. एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स. तो तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल मशीन आवर्स देखना है. एक्चुअल मशीन आवर्स दिया है क्वेश्चन में. देखो ये 10,000 मिला. Yes, 10,000. Yes, sir. हाँ, तो Okay, 10,000 listen. इंटू 5 रुपीज 10,000 into. Yes. 3,000. एब्जॉर्प्शन अमाउंट है हमारा 50,000. अब देखो यहाँ पे actual overhead is given in the question
is 80,000, but out of that 80,000 there are some things will be information is given. तो कि भाई कौन सा एक्सपेंस का दिया है, तो अमाउंट पेड अकॉर्डिंग टू लेबर कोड अवार्ड, तो ये तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ये हर बार थोड़ी लेबर कोर्ट में जाएगा और वो जीत जाएगा. सो हम लोग उसको लेस कर देंगे. फिर आपका एक्सपेंस प्रीवियस पीरियड का था, प्रीवियस का था ना, प्रीवियस ईयर था कि मंथ था? So previous month. So expense of previous month कितना है? 5,000. Yes. तो यहाँ पे actual overhead is treated as 60,000 and under absorption is 10,000. Just complete कर दो. So in the line it is given was rupees 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month. हाँ, तो करंट मंथ का जो 80,000 रुपीज है उसके अंदर ये 5,000 प्रीवियस मंथ का इंक्लूडेड है. तो हमारा यहाँ पे जो हमने 10,000 आवर्स लिखी है, बुक की है, वो करंट मंथ की है. तो हमको ओवरहेड भी एब्जॉर्ब किया वो करंट मंथ का है, तो अपने को अमाउंट भी सिर्फ करंट मंथ का चाहिए. तो प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का जो भी इंक्लूडेड होगा वो लेस कर देंगे. Yes. और ये एवर्ड का क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है और ये हर टाइम नहीं खर्चा होता है. एबनॉर्मल रीजन है कि लेबर कोर्ट में गए और लेबर जीत गए. वंस इन ब्लू मून. Yes. So in case if there was some expense which was recurring in nature, then we would not do anything. Sorry? If it was recurring in nature, suppose. Recurring nature, then it should be included. मतलब एवरी मंथ एवरी ईयर अपने को केस आता है लेबर के अंदर, कोर्ट के अंदर, और एवरी ईयर हमको कुछ ना कुछ कंपनसेट करके देना पड़ता है लेबर को, तो अदरवाइज नहीं. और जनरली लेबर साल में एक बार कभी नहीं जाते हैं, 10-15 साल में एक आध बार कंपनी के अगेंस्ट में जाते हैं कोर्ट में. तो ऐसा समटाइम्स होता है. और ये भी पेमेंट करते हैं लेबर को अवार्ड वगैरह कोर्ट से, वो भी करंट मंथ का या करंट पीरियड का नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का ही होता है. Yes. डन. So one second. Yes. Treatment of under absorption. So under absorption amount is 10,000. Out of that 60% किसके हिसाब से बेटा? Question specified defective planning, third last line. Yes. So 10,000 का 60% 6,000. तो ये 6,000 कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग P&L. Yes. नॉर्मल आपका आ जाता है 40%, 4,000.
तो हमें उसके लिए कौन सा रेट निकाल देना चाहिए? सप्लीमेंट्री रेट। ये लिख लिया बेटा? Yes, sir. नाउ सप्लीमेंट्री रेट 4000 divided by number of units is given बेटा क्वेश्चन में 40,000 ना? Yes. तो 4,000 divided by 40,000 कितना आएगा? ₹0.1 पर यूनिट। लिख लो सप्लीमेंट्री रेट। Yes. डिफेक्टिव प्लानिंग है तो हम उसके लिए कहाँ पे डेबिट क्रेडिट करेंगे? So costing. तो लिखेंगे कॉस्टिंग P&L 6,000 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। लिख लो इतना। फिर सप्लीमेंट्री रेट में कॉस्टिंग P&L जाएंगे सोल्ड क्वांटिटी। तो सोल्ड कितना है? 30,000 इंटू 0.10 3,000 and increase in value of closing stock 10,000 quantity into 0.10,000 तो ये हो जाता है टोटल 10,000। कंप्लीट कर लो। Yes. अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो जस्ट अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाला हमारे मटेरियल में है ऑलरेडी। देख लो आप क्वेश्चन नंबर 8। Yes. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The total overhead expense of a factory is 4,46,380. Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered in production at rupees 1.25 per hour. So मेरा absorption rate कौन सा हो गया? 1 rupees 25 पैसा। Yes, And sir. it is depends upon the number of hours. The actual hours worked 2,93,104. So we can multiply 293,104 into 1.25। Yes. तो कितना हो जाएगा? अमाउंट बेटा कितना आ जाएगा? It was 3,66,380. That is your absorption amount. Instead, how would you proceed to close the books of account, assuming that besides 7,800 units produced, of which 7,000 were sold, and there were 200 equivalent units work in progress. On investigation, it was found that 50% of under absorption overhead was on account of increase in cost of indirect material and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. Also give the profit implications of the method suggested. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेशंस ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ये महक फाइंड आउट करके बताओ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कितना होगा? Yes.
So 80,000 unabsorbed. Okay, correct. 1.25. So you get the answer 3,66,380. Correct. Yes. एक्चुअल ओवरहेड कितना दिया है? 46,380. 4,380. सो अंडर एब्जॉर्प्शन ये लिख लिया बेटा? Yes. नाउ अब इसमें से मुझे अगर सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, सो कैन आई से आउट ऑफ दिस 80,000 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? So unabsorbed was on account of increase in the cost of indirect materials and indirect labor. तो And the other 50% is factory inefficiency. हाँ, तो अभी ये जो 40,000 से है, तो हमारा जो 50% है डिफिशियंसी, बरोबर, तो उसका क्या करेंगे? So तो inefficiency costing P&L. यस, कॉस्टिंग पीएनएल 50%, तो ये 40,000, और इसके लिए क्या लिख देना चाहिए? क्या हुआ एग्जैक्टली ये 40,000 50% के लिए बेटा? The factory inefficiency. नहीं, पहला जो है वो इंक्रीज The इन, cost is there, so cost in increase हाँ, the cost कॉस्ट of ऑफ indirect materials, मटेरियल एंड इनडायरेक्ट labor. लेबर, तो वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, तो वो तो एबनॉर्मल रीजन हो गया। फिर नॉर्मल इनएफिशिएंसी जो है फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी, उसके लिए मेरे पास तीन ऑप्शन, कैरी फॉरवर्ड, कॉस्टिंग पीएनएल एंड सप्लीमेंट्री रेट। Yes. So factory inefficiency is a balance 50%, that is 40,000. अब supplementary rate for factory inefficiency के लिए, तो क्या 40,000 डिवाइडेड बाय, बेटा ध्यान से, 7,800 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड 200 इक्विवेलेंट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है, therefore 40,000 rupees should be divided by 8,000 क्वांटिटी। ये समझ में आया बेटा? अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं दिया होता, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट। लिख लो ये 5 रुपीज। डन? ये लिखा सप्लीमेंट्री रेट वाला पॉइंट बेटा? Yes. ये पूरा यहां तक Yes. 5 रुपीज तक हो गया ना लिख के? नाउ treatment of under absorption rupees। सबसे पहले एबनॉर्मल रीजन से उसको कॉस्टिंग पीएनएल में जाने देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्टिंग पीएनएल ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ indirect material and indirect labor। कितना अमाउंट बेटा? 40,000, राइट? Yes. नाउ सप्लीमेंट्री रेट की वजह से सोल्ड क्वांटिटी वाला अगेन कॉस्टिंग पीनल जाता है, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग।
सो मेरा क्वांटिटी सोल्ड कितना है 7,000. सो 7,000 इंटू 5 रुपीज 35,000. यहाँ तक लिखो बेटा. Yes. अब increase in value of closing stock of finished goods. कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 800 होगा. 7,800 यूनिट्स में से 7,000 हमने बेच दिया. Yes. 800 में से 7,000 मैंने बेच दिया. तो 800 इंटू 5 रुपीज कितना आएगा? 4,000. 4,000. And increase in value of closing work in progress. Equivalent quantity है मेरा 200 इंटू ₹5. कितना होगा? 1,000. सो मेरा 80,000 टैली. लिख लो, कंप्लीट कर लो. Yes. Done? Yes. Now please read question number 11. Yes. So we have to find out under absorption. तो सबसे पहले we have to find out absorption amount. तो बोलो absorption amount के लिए क्या कैसे लिखेंगे? Yes. Also, absorption rate, that is 10 हम्म. into the machine hours. That is कितना है machine hours? 48,000. 48. 48,000. 48,000 into ₹10. So my absorption amount is 4,80,000. Correct? Yes. Then we have to write the actual overhead given. इनर कॉलम में कितना दिया हुआ है बेटा? Also 6 lakhs. आउट ऑफ दैट क्या क्या इंक्लूसिव है वो एक्सक्लूड करना चाहिए. So 45,000 obsolete stores. सो रिटर्न ऑफ वाला 45,000 that we have to reduce. दूसरा And this 30,000 wages paid for a strike period. yes, तो wages paid for strike period. Amount 30,000. Yes. So 6 lakhs minus 45 minus 30,000. कितना? 5,25,000. Tell me the under absorption amount. 45,000. कंप्लीट कर लो.
Done? So, I'm writing. हाँ. Yes. In the last question, they provide the equivalent units quantity directly. In this question, we have to find out equivalent production quantity. So production quantity is 20,000, right? Yes. So output closing work in progress. Output means production quantity. Closing work in progress is given 8,000 quantity into 50% better. 50% is given in the question, work in progress. Yes. So 24,000 यूनिट जस्ट कंप्लीट कर लो. लास्ट टाइम क्वेश्चन में इक्विवेलेंट डायरेक्टली दे दिया था क्वांटिटी. Yes. डन. Now we will find out supplementary rate. So total absorption, under absorption 45,000. Out of that डिफेक्टिव प्लानिंग कितना बेटा? 1/3, 33.33%, I think something like that is given, no? Yes, 1/3. Your first requirement per small one is under absorption. So we did this small one. Now second is nothing but the small 2. 1/3. So 15,000 should be transferred to costing P&L. Yes. Done? Now balance is a normal reason. 30,000. So this 30,000 rupees हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी. Yes. सो 24 से डिवाइड करेंगे तो सप्लीमेंट्री रेट डन. सप्लीमेंट्री रेट Also, I'm writing. One second. Yes, sir. Done. now treatment of under absorption group is costing P&L due to defective planning 15,000, right? Yes. Now supplementary rate costing P&L sold quantity. Give me the sold quantity.
80,000. into 1.25 supplementary rate. Yes. How much rupees? 22,500. Yes. Next, increase in value of closing stock of finished goods. My production quantity is 20,000. Out of that, 18 is sold. So 2,000 into 1.25. How much rupees? 2,500. Increase in value of क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में 8000 यूनिट्स दिया है, बट उसका इक्विवेलेंट क्वांटिटी देख बेटा, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 4000। सो रिमेंबर वी हैव टू राइट 4000 इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑलवेज। 4000 into 1.25, I think 5,000 rupees. Yes. So 5,000 plus 2,500, 22,500, 30 plus 15, 45,000. Complete this. Yes. Done. अभी अपनी बुक में, अपना प्रिंट आउट में, अपनी नोट्स में आ जाओ, मेरी नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 13, just please go through that question. Question number 13. Yes. So this question is little bit tricky question, but easy if you understand. So Yes. just we go to the concept. XYZ Limited fabrics machines parts to customer order. The factory concerns fabrication of 20 number machine part to customer specification and the expenditure incurred on the job for the month ending 31st March 2020 is given below. So एक particular मशीन का पार्ट है, पार्ट का नाम दे दिया 20, उसके लिए उसका खर्चा क्या हुआ, तो क्या मटेरियल इज गिवन, देन Yes. labor is given. Now next one, this overheads, this overhead is are always absorption amount, always absorption, not an actual. Machine 1 2 hours at 2.25, 3 hours at 3.25 and 10 hours at 40 paisa per hour. So this is the absorption rate, right? Yes. Now the overhead rate 40 पैसा, 40 पैसा इसकी बात कर रही है रेट की,
per hours is based on 1500 man hours per week. So हम absorption rate निकालते हैं, उसकी amount की बात की है तो हमें उससे कोई problem ही नहीं आएगा, हमें उसकी information की जरूरत भी नहीं है. So this 40 पैसा, this 1500 is not required. तो ये additional information है. Then similarly, machine hours are based on normal working of machine 1 and machine 2 for 20 hours and 22 hours 33 minutes per week. ये भी absorption rate निकालने के लिए information चाहिए था, तो already हमको absorption rate दे ही दिया है, so not required. After the close of each week, ये important है. Yes. The factory's supplementary rate of recovery full expense on the basis of actual hours work during the week. इसका मतलब क्या हुआ, ये supplementary rate बेटा during the year कर रहे हैं, every week they pass every week. हमने ये जो क्वेश्चन किया था कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, उसमें देखो ईयर ऑलरेडी एंड हो चुका था, therefore it is supplementary rate end of the year. यहाँ पे during the year per week कर रहे हैं. During the month ending 31st March 2017, यहाँ पे 20 होना चाहिए, it's printed error. Yes. The total number of labor hours worked, तो ये काम की information है, 3000 and machine 1 and 2 work for 30 hours and 32 hours 30 minutes respectively. The actual overhead for three types of the hours were 1500, 90 and 97.50 पैसा. तो ये मुझे बेटा actual overhead and actual hours दिया, तो actual rate के लिए काम आएगी. ये किसके लिए काम आ जाएगी बेटा, actual rate के लिए. तो जैसे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, ये एग्जाम्पल में जहां पे हमने एब्जॉर्प्शन रेट और एक्चुअल रेट को कंपेयर करके भी सप्लीमेंट्री रेट लेके आए थे, स्टार्टिंग में था ना. Yes. हाँ, ये अमाउंट, ये जो 58 पैसा हम लेके आए थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एब्जॉर्प्शन रेट कंपेयर विथ एक्चुअल रेट. So absorption rate is given in the question, actual rate के लिए information दिया हुआ है. So now we can compare absorption rate with actual rate and we can find out the supplementary rate. You are required to prepare a cost sheet for fabrication of 20 number machine part leaving the supplementary rate. मतलब supplementary rate लगा देंगे तो हमारा जो cost estimated है, ये जो 72 rupees 25 पैसा, वो now actual बन जाएगा. So first I have to struggle for supplementary rate. Go heading calculations of heading go calculations of supplementary rate. अब देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मशीन 1, 2 एंड मैनुअल लिखा है, और यहाँ पे जो 3000 आवर्स दी हुई है वो मैनुअल की पहले दी है, मेन आवर्स की. तो मैं इसके लिए पहले मैं मैनुअल लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्टिकुलर के बाद. मशीन 1 and machine 2. एक्चुअल ओवरहेड देखो रुपीस कितना दिया है एक्चुअल ओवरहेड, 1500, 90 and 97.5. Yes. So here rupees 1500, then 90, 97.5 divided by actual hours. Yes.
तो इनका देखो पहले का 3000 है, ये रहा 3000, दूसरे का 30 आवर्स एंड तीसरे का 32.30, 30 है तो 5 लिखना पड़ेगा, 30 मिनट्स है तो 30 / 65 हो जाएगा ना। तो Yes. नाउ एक्चुअल रेट .53, थर्ड वाले का दे दो तो। अच्छा वो भी 3 रुपीज ही है। 3.0. 97.50 पैसा डिवाइडेड बाय 32.5 लिखना बेटा, 32.3 नहीं 32.5, 30 मिनट्स मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.5 हो जाता है। Yes. नाउ एब्जॉर्प्शन रेट, तो मैनुअल का 40 पैसा है, इनका मशीन 1 का 2.25 है और इनका मशीन 2 का 3.25 है। अब देख बेटा, यहां तक लिखा तूने महक? Yes, sir. Written. हाँ लिख लो फिर मुझे बता दो। Written. रिटर्न ना। हाँ। Yes. अब देखो बेटा, यहाँ पे हम जब सप्लीमेंट्री रेट की बात करेंगे, हमने कस्टमर से रिकवर किया 40 पैसा, एक्चुअल खर्चा कितना है 50 पैसा, तो ये 10 पैसा वी हैव टू ऐड इन कॉस्ट, Yes. राइट। Yes. मैंने रिकवर किया 2.25 बट खर्चा हुआ 3, तो डिफरेंस 75 पैसा अगेन पर आवर्स वी हैव टू ऐड, एंड एक्चुअल खर्चा 3 हुआ और हमने ले लिया 3.25, तो ये 20 पैसा हमको रेड्यूस करना पड़ेगा और आर के हिसाब से। लिखो सप्लीमेंट्री रेट 0.10, 0.75 एंड 0.25, प्लस प्लस माइनस, ये समझ में आया ना प्लस प्लस माइनस का। Yes. हाँ। Yes, sir. नाउ लिखो कॉस्ट शीट, लिखो आफ्टर सप्लीमेंट्री रेट, आफ्टर लेविस सप्लीमेंट्री रेट, आप लिख लो कॉस्ट शीट के बाद कॉस्ट शीट आफ्टर लिविंग सप्लीमेंट्री रेट। नाउ देखो, अगर एग्जाम में टाइम है तो हम प्रॉपर लिखेंगे, नहीं है तो सीधा गिवन 72.25 करके चले जाएंगे। अगर है अपने पास टाइम तो हम लोग लिखेंगे 39 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 15 रुपीज, प्राइम कॉस्ट 39 प्लस 15 कितना होगा 54, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट, राइट। Yes. अभी देखो ओवरहेड गिवन, ओके टोटल सबका दे दिया है 18 रुपीज 25 पैसा, Yes. प्लस और माइनस सप्लीमेंट्री रेट। अब देखो मैनुअल का कितना 10 पैसा है ना पहला मैनुअल, तो मैनुअल का इधर देखो 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स इंटू 10 पैसा कितना हो जाएगा 1 रुपीज। Yes. मशीन 1 का आवर्स है 2 आवर्स और मेरा मशीन 1 का है 10 पैसा, नहीं 75 पैसा, तो 75 इंटू 2 1 रुपीज 50 पैसा। मशीन टू का 3 आवर्स है और -25 पैसा, हाँ -25 पैसा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 पैसा। तो
18.25 plus 1 plus 1.5 minus 0.75. सो यहाँ पे कितना रुपीज ओवरहेड एक्चुअल हो गया 20. हमने एब्जॉर्प्शन के हिसाब से चार्ज किया था 18.25, अब हो गया 20 रुपीज. तो मेरा कॉस्ट शीट का अमाउंट आ जाएगा 74. एनी डाउट बेटा? All done. Done? Yes. अभी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देखते हैं. एक सेकंड. Yes. स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? Yes. हाँ, पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 4.37. डेट तो ध्यान नहीं है मेरे को, मैं जब चेंज कर रहा 4.37. Illustration. हाँ, illustration number 8, page number 42, 4.42. Yes. मिला बेटा? Yes. Just read the question.
Yes. मैं रीड किया क्वेश्चन बेटा? Yes. अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ट्राई करो बेटा, कैसे सॉल्व होगा? हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा? So we have to prepare a cost sheet. एक्चुअल रेट, सप्लीमेंट्री रेट तभी मिलेगा ना बेटा? Yes. तो एक्चुअल रेट के लिए मुझे क्या चाहिए? So एक्चुअल ओवरहेड, actual एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल yes. ओवरहेड कैसे मिलेगा? सो समवेयर क्वेश्चन स्पेसिफाइड बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड आर सेम। So they have specified that the overhead rate was rupees 8 per hour based on 3,000 man hours. हम्म, वो मेन आवर्स का हो गया। मशीन 1 एंड मशीन 2 का कैसे मिलेगा? Um, yes, based on the normal working of yes, no, machine one and machine 40 hours and 45 hours per week. और एक्चुअल रेट मशीन 1 का चाहिए, मशीन 2 का, और मैनुअल, मैनुअल का दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं कुछ? So 2,400. दैट इज द आवर्स। और अमाउंट कहीं कुछ दिया है? एक्चुअल ओवरहेड कितना है? So now there are three possibilities, no? Calculations of supplementary rate. Listen. Manual, machine 1, machine 2, right? Yes. Now, manual rate is 8 rupees. 3000 into 8 कर दूंगा तो मुझे बजटेड ओवरहेड मिलेगा बेटा? Yes. तो बजटेड ओवरहेड कितना? 24? 24,000. 32 lakh 44. 24,000 ना? Sorry, sir. Yes, sir. Now tell me the number of budgeted hours as per machine 1. 40 is given, Yes, sir. and rate per hours of machine 1, 45. Yes, sir. एक 1 मिनट, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हुआ। Wait for one Yes. minute.
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया कनेक्ट। हेलो महक, Yes, sir. Yes, sir. हाँ 1-2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर स्टार्ट होता है तो लैपटॉप से। मैंने मोबाइल से तो कनेक्ट किया, Yes. जूम का एरर आया है। Yes. आज कॉलेज है बेटा? So I'm not attending. ओके, एक काम करते हैं मैं, यहाँ पे मैं लेक्चर्स एंड करता हूँ Yes. और फिर कल रखेंगे सुबह 7:30, ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके।